आरंभ ना करम सर पिला तो सेतिक ही आसुचंदी पिला बेसी आसुना ठीक ठीक अछि आरंभ कर आज्ञा तो आमे काली कौन डिस्कशन करथिले डाटाबेस डाटा स्ट्रक्चर केमती डाटाबेस आमे सर्च करबा कहीं डाटाबेस यूजफुल केमती यूजफुल को डाटाबेस आमे यूज करूचे इन आवर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड ए सब जिनस आमे काली डिस्कशन करथिले ए तो आज नेक्स्ट पार्ट डिस्कशन करबा ओके visible my screen is visible now Oh, sir. okay then this part will be discussed today. Yesterday we have discussed so many things on database management system and data structure, database searching and so on. Today we will be discussing database management system. Okay. So what will be the basics of database management system? These 3, 4 to 5 points I have written. Just read carefully. 5 points in database management system. Okay, first point is understand the evolutionary pattern of development of database approach. जेमती आमे फंडामेंटल ऑफ आईसीटी बा जो MLII-103 पेपर रे पढ़ी थिले डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स तो सेमती database management system रे मध्य how the database management system is evolved from time to time. First point is that. And second point is comprehend the need for a database management system and its primary objectives, database architecture, and basic issues in the complex and expanding environment of database management. Third one is distinguish between various data models and know the characteristics of each data. Fourth one is become convergent with relational database technology. And finally, gauge emerging trends in data management. So these are the 5 basic points in database management system. Clear? So we have to concentrate on these 5 points while we are going to read or elaborate or for major discussion or a thorough discussion on database management system. Okay, then come to the point. What is the concept of a database management system?
Basically, database management system or DBMS, what we can say in a short form, DBMS, which full form is database management system, is a software package which is designed to define, to manipulate, to retrieve, and to manage data in a database. We have created a database, then we can manipulate the data, we can retrieve the data, we can also manage the data, and we can define the data within a database. That is the basic concept. That is the basic concept of database management system. And particularly this one, the database management system, is a software package. This is a software, and the computer professionals who have the computer programming knowledge, and they have prepared the database, and which is a basically software package. Clear? A DBMS generally manipulates the data itself, the data format, field names, record structure, and file structure also. It also defines rules to validate and manipulate this data. Which data is present in a database, so it can define different rules to validate and manipulate whether this data is authentic or not. So it is also defines in the database system. And we can anyone can manipulate also that data while entering to the database management system. Clear? Yes, sir. Second one is DBMS relieves users of framing programs for data maintenance. Fourth generation query language. Fourth generation now comes to the fundamentals of ICT, paper 103. Fourth generation, when we were discussing on 18th, or I think 18th, last Sunday, we were discussing on this fourth generation of computers and different languages of computers. The fourth generation query language, such as SQL, are used along with DBMS package to interact with a database. So here it itself clears from the beginning the database management system is particularly a software package which is run, which is programmed through SQL language, which is fourth generation language of the computers, to why it is created or why it is moderated. It is moderated or created to interact with a database. The the library users can interact with a database package. And some examples of other DBMS include SQL Server, Oracle, DBA, and FoxPro. These are some other examples of database management system. Basically, DBMS is a connection tool. What we are discussing in second point itself is written in finally on the bottom of the slide. The DBMS is a connection tool between the users and the data. What information or what data is present or available in a database, so that is the only connection tool. DBMS, database management system, is only a connection tool between the data available in the database and the user who uses the database for their purpose. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Then data hierarchy. It is a basic concept in data and database theory and helps to show the relationship between smaller and larger components in a database or data files.
It is used to give a better sense of understanding about the components of data and how they are related. Okay, what data is available in the database and how many components and what components of those data have. It is the data hierarchy process. Data hierarchy connects or tells us about this thing, how the different components of data is available and how they are related to each other. This is only the data hierarchy process. Okay, then see, this is the database system, how the database is created. এটা দেখিলে ক্লিয়ার বুঝি হଉଛି database মানে database କେମିତି କ୍ରିଏଟ ହେଲା କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ଏଇ ଫିଗର ଦେଖିଲେ ବା ଏଇ ଗ୍ରାଫ ଟା ଦେଖିକି ଜାଣି ହଉଛି ନା ଏଇଥିରେ କିଛି କୋଉଠି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି? The screen is visible to all. Yes, sir. हाँ हाँ तो एबे मो कहया कथा बा मु पचारुची जे एई जो फिगर ता मु देखैची बा एई जो ग्राफ ता दिसुची वर्तमान समस्तंकु तो एई ग्राफ रे ग्राफ रो कांसेप्ट ता समस्तंकु क्लियर होची ना कोठी किछि अबुझा रहउची? हाँ सर क्लियर होची दिसुची सर क्लियर दिस पचार जार जा किछि बुझिवार अछि बा ए करिवार अछि पचार पचारले ही तो डाउट क्लियर होबो ना। ना क्लियर बुझी जाउची क्लियर हां तो टिके बुझेई दियंदो हाँ ना ना मु पचारुची सेति में जे एई जो ग्राफ ता मु देखैची लेफ्ट साइड रे जो ब्लू कलर आरो मार्क अछि तो टॉप रे होची डाटाबेस माने केमिति डाटाबेस क्रिएट करा जाउची सर बीट रो डाटाबेस को केमती स्टेप बाय स्टेप जाईची सेटा आपण पूरा देखै चंदी रो करके हाँ हाँ सेटा तो एई तळ दिटा किछि एते वैल्यू रखुनी छाडी दियो तो ए जो फील्ड रो आरंभ होची तो फील्ड हमें केमिति क्रिएट करूचे बा जे डाटाबेस तर तयारी करूचंदी बा क्रिएट करूचंदी हाउ they are going to start but they are going to create a database. So first of all they are going to create a field. So what is field? Only just information. This is just an example जे मु कहि दउची तुमको क्लियरली धर एई जो आमे डाटाबेस गोटे करूचे एई डाटाबेस रे केवल इंफॉर्मेशन अछि कोन ना दी प्रकार गोटे अछि बीबीए रो ऑनर्स मॉर्निंग सेशन रो आ बीबीए ऑनर्स रो इवनिंग सेशन रो दीटा सेशन धरंतु कोनोसी गोटे कॉलेज रे दीटा सेशन ने बीबीए कोर्स अछि तो सेइटार गोटे डाटाबेस माने क्रिएट करिसंती जो डाटाबेस रे कि एई दीटा इंफॉर्मेशन कंप्लीटली अवेलेबल बीबीए ऑनर्स मॉर्निंग सेशन एंड बीबीए ऑनर्स इवनिंग सेशन बोथ पार्ट तो सेतरे कोन करूचंदी से ता तळकु जदी आमे आसुचे ना फाइल फाइल क्रिएट करूचंदी से केमिति ना जो स्टूडेंट नेम ता रोल नंबर एवं को क्लास रे से अछि मॉर्निंग शिफ्ट रे ना इवनिंग शिफ्ट रे ना को शिफ्ट रे तो दीज आर द फाइल्स गोटे फाइल ले माने बहुत माने जो कोन हमर मेनी रेकॉर्ड्स आर देयर फील्ड ए जो फील्ड हमें कहले तो से फील्ड रे केवल गोटे इंफॉर्मेशन तो फील्ड इज ए सिंगल वन when we are going to add some more fields that will be a record okay
when we are going to add some records all together, that becomes a file. When some one or more files are there integrated, we are going, if we will go to add some files all together, so all those files will be stored in a database. That itself we call the database. Yes, sir. Okay, first of all, field. We have to create a field. In a field, there is only a information. What information? Maybe student name, maybe institution name, maybe or some other name or information. Single information is written. So we can call that field, that is called as field. When one or two field is interrelated or interconnected, that becomes a record. When some or more records can be integrated or united all together, that becomes a file. When two or three or more files are there, then it becomes a database. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So what is the full form of ASCII? Yes, sir. ASCII. In byte, it is written letter M in ASCII. What is ASCII? Write down this one. This I have not written in here any slide also. ASCII. The ASCII full form of ASCII is American Standard Code of Information Interchange. American Standard Code for Information Interchange. That is ASCII. And what is written in below box 01001101, that is the binary digits, and which you can tell the computer language 010110 like this. So these are only the binary digits, and this is for letter M. The ASCII code is this one. Okay. Yes, sir. Yes, sir. American Standard Code for Information Interchange, ASCII, and this is a code. And for letter M, the code is 01001101. This is the ASCII code. Like M and some other formats also for other letters. That is not applicable in our field, but we have some knowledge. We should have some knowledge on it. So that's why I have collected and I have written the ASCII code, American Standard Code of Information Interchange, and for letter M, this code is like this. Okay. Then how database is created? It is clear for all. Yes, sir. Okay. Yeah. Then comes data integrity. How the data can be integrated? Data integrity refers to the accuracy and consistency of data over its life cycle. Compromised data, after all, is of little use of enterprises, not to mention the dangers presented by sensitive data loss. For this reason, maintaining data integrity is a core focus of many enterprise security solutions. Data integrity means how the more numbers of data can be integrated or can be united or can be compromised. In the point of view, माने आमे कहूचे जे डाटा इंटीग्रिटी एइथिपई हमकु डाटाबेस सिस्टम रे अवेलेबल बा करा जाए जे मोर नंबर्स ऑफ डाटा कैन नॉट बी लॉस.
माने जहाँ इनफॉरमेशन हमको दरकार होची बा जो इनफॉरमेशन सोसाइटी को दरकार होची व्हाट इनफॉरमेशन वी रिक्वायर एंड व्हाट authentic information we also require that cannot be that should not be lost in a database. That is the first point, but the major point of data integrity system in DBMS. Okay, so for this reason, maintaining data integrity is a core focus of many enterprise security solutions. Second one, data integrity can be compromised in several ways. In different ways, you can integrate more numbers of data. Each time data is replicated or transferred, it should remain intact and unaltered between updates. Sir, I have a question. हाँ, So data integrity रो गोटे example दियंतु means केमती एग्जांपल तो माने एठी सेइथपय तो कहली ए जो ग्राफ रो किछि बुझी होउछि ना बुझी होउनी बोली तो सेइथपय पचारथिली ए जो डाटा हाँ ग्राफ एथि तो बहुत होउछि बट डाटा इंटीग्रिटी रे कोन हाँ डाटा टा हाँ हमें सेटा ऐड डाटा करबा या फिर इंटीग्रिटी स्क्वीज करबा डाटा नहीं टा को हमें स्क्वीज माने ताको टिके एम्फसाइज करबा बेटर करबा पई माने करा नहीं नहीं ना 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 इंटीग्रिटी मीन्स होची जे मोर नंबर्स ऑफ डाटा various numbers of data can be united in one platform, that is data integrity ହେଲା yes हाँ तो जेमिति आमे धरंतु एठी जो डाटाबेस क्रिएट करा हेउची एथरे दीटा वर्तमान डाटा अछि जोटा कि इंटीग्रेट हेची बा इंटीग्रेशन हेची दीटा डाटा कोन ना गोटे बीबीए ऑनर्स मॉर्निंग सेशन आउ गोटे इन्फॉर्मेशन होची बा डाटा होची बीबीए ऑनर्स इवनिंग सेशन the both session data can be integrated here because in one space we can find or we can retrieve all the informations of BBA. yes sir We need not to have a second or separate database for evening session. We need not to have a separate database for morning session. That's why in a single database we have integrated both the data BBA honors morning session and BBA honors evening session also. yes sir yes Now it is clear data integration. yes sir absolutely हाँ. thank you sir. So second one is data integrity can be compromised in several ways. Each time data is replicated or transferred, it should remain intact and unaltered between updates. सेटा मु या पूर्व क्लास रे भी डिस्कशन बेले कहितली जे डाटाबेस रे कोन होची ना जते बेले डाटा पूर्ण ही जाउची धर आमे नुवा डाटा मदन ताजेरे ताकू माने अपडेट भी करूछु अपडेट भी करि परछुंते करी होउची बा करा जाउची मध्य करबा भी निहाती दरकार काहे कि ना से जो डाटाबेस तुम यूज करूछ जदि अपडेट इन्फॉर्मेशन सेथरे न रहिबो बा न मिलिबो ताहले से पुराना डाटा को बा सेटा को पुनी तमे तले मार्केट रे प्लेस करूछ केयले से डाटा को आउ किनिबे ना yes sir कारण अपडेट इन्फॉर्मेशन समस्त को दरकार ना आज लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जमे न दबो से ओल्ड माने पुराना खबर को खाली पुराना का रिकॉर्ड को बजौतबो करना हमर अच्छी डाटाबेस ता समस्त नियंतु यूज करंतु भलो अछि ठीक के नेबेनी जे भी थरे नै गेला से देखला रे आर थरो ता जहां आनिथुले एथरो तो सैया yes तो sir इट डाटा शुड वैल्यू रिमेन ऑटोमेटिकली हाई माने हाई करे बदलले डिक्रीज करिवो हां सेति पई सब बेले डाटाबेस गुडा को अपडेट करा जाय आ माने ताकर स्टाइल आ फॉर्मेट रे किछि चेंज करा जायनी किंतु अपडेट इन्फॉर्मेशन केवल सेथरे स्टोर करा जाय जहाँ स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जहाँ अच्छी सेटा से माने रखंती केवल डाटा बा इन्फॉर्मेशन जहाँ अपडेट थाए सेटा से माने रिप्लेस करंती error checking methods and validation procedures are typically relied on to ensure the integrity of data that is transferred or reproduced without the intention of alternation बुझिला किछि डाटा को अल्टर न करिकि ताकू मते रिप्रोड्यूस करी हुए आज हम जर देइचे बा जहां भी इंफॉर्मेशन डिस्कशन करछे so that data can be reproduced again and again
Okay. Yes, sir. Then data independence. Data independence helps the users to keep data separated from all programs that make use of it. What is data independence? Sir, It is voice clear defined. होनी. Voice clear only? No, sir. Yes, sir. Voice Maybe is it's clear, sir. some network problem. Subuni? Hello? ଶୁଭୁଛି ତ ଆମକୁ? ଶୁଭୁଛି ତ? ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ। ହଁ ହଁ କାହାର ବୋଧେ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ଥିବ ମାନେ ସିଗ୍ନାଲ ଶୁଭୁଛି ଯଦି ତ? ଟିକେ ୱିକ୍ ଥିବ ବୋଧେ ଶୁଭୁନଥିବ ଆଉ। ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ। ହେଇଥିବ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ବି ହୁଏ କିଛି କିଛି। Okay. So data independence is defined as a property of DBMS which helps the users to change the database theory at one level of database system without requiring to change the same at the next higher level. So this is called data independence. So data independence helps the users to keep data separated from all programs that make use of it. जो प्रोग्राम रे आमे से database रू data retrieve करके यूज करूचु माने that data keeps separated माने कौनसी संगे काकू से मर्ज करेनी आमे जो प्रोग्राम रे जदि सेम डाटा हुए तो आमे गोटे डाटा को डिफरेंट प्रोग्राम रे यूज करूचु हेले भी से डिफरेंट फॉर्म रे ही शो करेबो केबे हेले कौनसी डाटा जते प्रोग्राम रे आमे यूज करले भी से मर्ज करिवो नाही Yes, sir. Okay, sir. okay then goals by objectives. What are the objectives of DBMS? First goal is store information. Second one is maintain information. Third one is retrieve the information. These three major goals or major objectives of creating a database or database management system. So first of all, we are going to use a database for what purpose? Now to store information. आमर फास्ट बेसिक पॉइंट रोची बा बेसिक एम रोची गोटे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रे बा डाटाबेस क्रिएशन रे कोन ना फास्ट होची जे हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन बा मोर नंबर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन स्टोर कना जते बेले कोन फ्यूचर रे दरकार होची बा दरकार हबो सेते बेले हमें ताको रिट्रीव करिवु फॉर दिस पर्पस वी आर गोइंग टू स्टोर मेनी इंफॉर्मेशन इन ए डाटाबेस. Then second one is maintain information and खाली तो स्टोर कर देले हबनी ता सहित हमकु मध्य प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करिवा को पड़िबो हाउ टू मैनेज द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन ए डेटाबेस. थर्ड वन इज रिट्रीव इट आ जते बेले दरकार करूचे बा जहार भी दरकार होची सेते बेले हमें ता देरु बा सेही डेटाबेस रु हमें हमर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीव करूछु. These three basic goals of database management system. So primary goal of database management system is to provide a way to store and retrieve database information that is convenient and efficient also. So management of data involves both defining structure for storage of information and providing mechanism for manipulation of information. बुझिएला. Yes, sir. Okay. So these are the basic goals or the three major goals of database management system. Then evolution of database.
how and when the database management system is evolved or generated. The primitive is a basic building block that can be rearranged to execute a part of a given DBMS operation. Primitives aim to minimize the implementation time and also improve the reusability of code. Furthermore, they usually are easily parallelizable. ମାନେ ଯେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ତମର ପାରାଲାଲ ହେଇକି ଯାଉଛି କୋଉଠି କାହାକୁ କ୍ରସ୍ କରୁନି ବା କରୁନି ତ ଦିସ୍ ଡାଟାବେସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ଡାଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ they are in a database system, they are going in parallel, they don't overlap each other. बुझला तो in 1960 Charles W. Buchman designed the integrated database system, the first DBMS, what we have called the first DBMS system by database management system is evolved in 1960 by Charles W. Buchman, who designed the integrated database management system. Clear? But before 1960, when in the late 1940 or early 1950, the computer, the society, by we, the civilization, human civilization or the human society has witnessed the first generation of computers during that time. So after that, already database system is evolved, but authentically it is written by, it is accepted that in 1960 Charles W. Buchanan designed the integrated database system which we call the first DBMS. But nevertheless, we should not have any doubt that before 1960 database management system has been evolved, but the integrated database system is evolved for the first time in 1960. Clear? So IBM, not wanting to be left out, created a database system for their own known as IMS. IBM जो आमर कंपनी अच्छी कंप्यूटर कंपनी सेमाने मध्य database system क्रिएट करथिले फॉर देयर ओन, ताको निजर बा निज पई केवल यूज करिया पई सेमाने ओटे करथिले तो सेहीटा को ताको सेमाने ना देथिले जे IMS, and for public particularly in the general purpose use and for the public use, the integrated database system was designed and flowed in 1960. Okay, the second generation system is evolved in late 1960. Operating systems take care of file management system. Third generation also evolved in early 1970. Here, a layer of DBMS has been added over the existing operating system. जो operating system रे first generation और second generation run करूथिला, तो third generation ने से माने कौन कले ना आउ गोटे extra layer एथरे add कले. So this is the evolution history of database management system. Okay. Okay, sir. Then what are the major functions of a database management system? There are several functions that a DBMS performs to ensure data integrity and consistency of data in the database.
The 10 functions in the DBMS are, these are 10 functions separated by comma. Okay. Okay, sir. Data dictionary management number 1, data storage management number 2, data transformation and presentation number 3, security management number 4, multi-user access control is number 5th, backup and recovery management is the 6th, data integrity management 7th, database access languages and application programming interface is 8, database communication interfaces is 9, and last one is transaction management. So these 10 basic functions of DBMS. Sir, what Okay. is the sir, what is the main use of DBMS in management system? In management system means which management? And in library management or Yes, in sir. जो आमर जो कहूचे आमर management system means बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम जो एमबीए बा बीबीए एमबीए जो फील्ड आमे कहूचे सेही पर्पस ना व्हाट इज इन द लाइब्रेरी मैनेजमेंट. In library management, sir. Acha. In database management system is itself a management system in library and information science field. What I have discussed earlier, some time before, the basic goals of a DBMS कौन होची ना सेटा होची फास्ट आमे रखुचे जे स्टोर इंफॉर्मेशन, सेकंड वन होची हम ताकू मेंटेन द इंफॉर्मेशन, and third one is retrieve the information. So these three basic goals are the functions of library database management system in library and information science field. Particularly, library is a information center. Those library professionals or the persons working in library with a requisite library and information science knowledge, so they have that idea, but they have that capacity to store information in a database, to manage but to maintain the information in a database, and third one is to retrieve the information for the betterment of the library users. So these only the library maintenance or the database management system in libraries and different libraries. Okay, sir. Thank you. माने आमर मेन सुन माने मो कहया कथा जहाँ भी डाउट होची पचार किसी असुविधा नहीं, किंतु बेसिक जिनिस होची लाइब्रेरी रे आमरे मैनेजमेंट सिस्टम ता कोन रहउची बा जो डाटाबेस मैनेजमेंट बोली आमे कहूचे, तो खाली डाटाबेस मैनेजमेंट नुए आमर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होची गोटे मेजर पार्ट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड. माने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट खाली डाटाबेस मैनेजमेंट नुए, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इज द बेसिक कौन माने आमर सिस्टम माने लाइब्रेरी रो बा लाइब्रेरी प्रोफेशन रो बा लाइब्रेरियन मानकर मुख्य भूमिका बा मुख्य रोल होची जे हाउ दे कैन मैनेज द ऑल द इंफॉर्मेशंस अवेलेबल इन एन इंफॉर्मेशन सेंटर. The other name of the library is information center, and the designation of librarians are not same in each and every library. If you go to the RRL, which is present in our Bhubaneswar beside to Utkal University, now it renamed as IMMT. So the personnel working in that libraries, they have their designation documentation officer, information scientist, like this. They are not designated as a librarian. And in state, we in the state of Odisha, in different libraries, the designation of library professionals are librarian, assistant librarian, or some other like this. But in what in research institutes or in special libraries, you cannot find the designation of librarian there. They are documentation officer or cataloger or information scientist, like this, or information officer, like this. So the basic
function but basic role of a librarian in the library to manage all the informations available in the library for dissemination to the library users. That the basic function but basic role of librarian is to manage the how to manage the information. Okay, clear है ये concept? Yes, sir. हाँ, खाली database management बोली नुहे तमे ओवरऑली चिंता कर जे हमर जे कोनोसी लाइब्रेरी रे लाइब्रेरियन मानकर मुख्य रोल होची जे हाउ टू मैनेज ऑल द इंफॉर्मेशंस अवेलेबल इन दैट लाइब्रेरी. एबे जेहेतु वर्तमान माने डिजिटल इंडिया आडू आमे जाउचे बा लाइब्रेरी उडा सब कंप्यूटराइज्ड हेई गलानी बा डिजिटल भी हेई गलानी तो ए सब दृष्टि रु वर्तमान आमे डिफरेंट डाटाबेस सिस्टम यूज करूछु. तो सेटा गोटे माने कोन हमर गोटे एडिशनल पार्ट बा सेटा गोटे हमर जो टेक्निकल पार्ट बोली आमे कहबो किंतु हमर बेसिक रोल होची खाली डाटाबेस मैनेजमेंट में हमर रोल होची पूरा संपूर्ण लाइब्रेरी रो डाटा बा लाइब्रेरी रो जो इंफॉर्मेशन हम पाखरे अछि बा ताकू आमे केमिति हैंडल करूछु ताकू केमिति मैनेज करूछु ताकू केमिति मेंटेन करूछु जे फॉर द बेटर डिसेमिनेशन टू आवर लाइब्रेरी यूजर्स. Okay, so these are the basic 10 functions of database management system. एथरे कौन होची ना data dictionary management. Data dictionary management means data can be arranged in a alphabetical order. That is the first point. Then data storage management, data transformation and presentation. How we are going to present the data available in a database. The security management, we have to ensure that the data available in that database is secured. Then multi-user access control. When the multi-users or more numbers of users can access the available data in a database at a time. Backup and recovery management. Backup system should also be there because if the system is crashed for any reason, so when it will be crashed, then all data available in that system will be crashed. That's why we should have that backup system. Every day, what we are doing or what functions have been commanded or have been ordered or have been requested to the database, all the data, all the information, all should be backup. बुझिला डेली ट्रांजैक्शन रो हमकु बैकअप नबाकू पड़े. दैट इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Sir, but I have a query, sir. What is the difference between RDBMS or DBMS? That is RDBMS is random and DBMS is only database management system. RDBMS is random. That R is stands for random. Randomly, we are choosing any information or any data randomly. Sir, we Just can for say example, ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ clear କରି ଦଉଛି ଯେ हाँ R stands for relational. Yes, sir. RDBMS Relation Database Management System. हाँ that is random. ମାନେ ମୁଁ ସେଇ concept ଟା clear କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି. ତମେ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଟେଷ୍ଟ କରୁଛେ ब्लड सुगर टेस्ट करूचे जो मानकर सुगर रोची बा जो डायबिटीज अछि बोली कहउचंदी आमे तांकर गोटे ब्लड सुगर टेस्ट करिया पई डॉक्टर माने गोटे प्रेस्क्राइब करंती कि नहीं? हाँ सर. हाँ तो सेते बेले कोन करंती से आइदर कोहंती जे फास्टिंग ब्लड सुगर टेस्ट कर जदि फास्टिंग रे किछि प्रॉब्लम आसुची ताहले सेटा पुनी खाइबार 2 घंटा परे आउथरे पुनी ब्लड निया जाय सेटा पीपीबीएस बोली कहंती पोस्ट पैंड्रियल माने जो ब्लड सुगर बोली सेटा कहंती त सेटा करंती जदि इन केस जने धर जाईची डॉक्टर पाखु किंतु से धरंतु खाइ देईची
सकाळु धर किसी से ब्रेकफास्ट नहीं जाइछन्ती एवं तापर डॉक्टर पाखु जाइछन्ती तांकर जो प्रॉब्लम धर किछि होउची बोली से जाय कि तांको कहउछन्ती सेठी डॉक्टर कोन कहउछन्ती ना अच्छा आपण खाइ दैछन्ती ना हां सर मो ब्रेकफास्ट नहीं जाइछि ताहले आपण गोटे रैंडम ब्लड शुगर कर दियन आरबीएस बुझिला माने एटा पूरा बेस्ट एग्जांपल ऑफ द आरडीबीएमएस एंड डीबीएमएस बुझिला कि नहीं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रे आमे कोन करूचे ना हम पाखरे डाटाबेस अछि बा जो डाटाबेस हम पाखरे अछि आमे सेथुरु ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूछु बा रिट्रीव करूछु रैंडम डाटाबेस सिस्टम रे कोन होजी ना रैंडमली यू कैन चूज ए डाटाबेस एंड यू कैन give a request to that database and you can have your information retrieved from that database also. Okay, sir. Thank you. Then what is the architecture of database management system? Database architecture focuses on the design, development, implementation, and maintenance of computer programs that store and organize information for business, agencies, and institutions. A database architect develops and implements software to meet the needs of users. The design of a database management system depends on its architecture. बुझिला जेमिति आमे आम निज घर जेतेबेले नुआ घर गोटे आमे तयारी करी जाऊ माने प्लान करूछु तयारी करिवा पई आमे कोन करूछु ना हमर समस्तकर मन रे गोटे रहउची जे आमे बेस्ट आर्किटेक्ट एक्चुअली जे अछंती हमर पाखरे बा हम सराउंडिंग रे आमे ताको पाखु को जाई कि हमर गोटे स्ट्रक्चर ते आनिमु एवं सी जो स्ट्रक्चर देबे हमर जेति की एरिया दर लैंड अछि सेही लैंड रे आमे केते कंस्ट्रक्शन करिवा पई चाहूछु तो सेही अनुसार सी गोटे डिजाइन ते देबे तो सेही डिजाइन को धरि कि आमे हमर घर तयारी आरंभ करू एक्जेक्टली सेही जिंस जे डाटाबेस जेतेबेले क्रिएट करा जाउची फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेट ए डाटाबेस आर्किटेक्चर माने हमर सेही डाटाबेस रो डिजाइन ता केमति होबा दरकार लुकिंग ता केमति थिबो जेतेबेले आमे शो करिबु दरंत आमे स्क्रीन ने आमे कोन सोटे डाटाबेस सर्च करूछु तो से डाटाबेस रो माने विंडो पेज ता कोन हेतिबो बा केमिति दिसुची कोन दिसुची कोठी सर्च इंजन अछि केतेटा सर्च इंजन अछि एवं तार लुकिंग ता केमिति अछि ए सब जिनिस को हमगु ध्यान देबा को पड़े बा जे क्रिएट करंती डाटाबेस से माने सेटा को ध्यान रे रखी बा ताका माइंड रे रखी से सेटा गोटे आर्किटेक्चर डिजाइन रे प्रस्तुत करंती ओके Yes, sir. Okay, sir. then data modeling how to model the different data. Data modeling is the process of creating a data model for the data to be stored in a database. The data model is a conceptual presentation of data objects, the associations between different data objects, and the rules. So these are the models of different data. And the data available or stored in the database. So what should be the model, what should be the different data structure, so that can be modeled. While before creating a database we have to go through all these systems, particularly data architect and data modeling. Okay. Okay, sir. What type of data will be present in the database? What type of data will be present? माने कोन माने को प्रकार डाटा हम रखिबू डाटाटा केमितिका हेइतबा दरकार ए सब जो थ्योरी बा ए सब जो कांसेप्ट हम माइंड को आसुची तो एई सब कांसेप्ट गुडा को बा एई सब जिंस गुडा को
before creating the database, all these things should be clear. Then entity relationship model was developed by Chen, a scientist, in 1976-77. During 1976 and 77, the entity relationship model was developed by Chen. Yes, sir. Then types of relationship. ଏବେ जो हेले कहले हमें डाटा रिलेशनशिप बा एंटिटी रिलेशनशिप. So what types of relationship are available? So here is one. 1 is to 1, 1 is to n. Hierarchical model. N is to 1, n is to m, that is network model, or hierarchical model, network model, relational model, object oriented model. So these are of 4 types of relationship among different data. 1 is to 1 means first one is 1 is to 1. 1 is to 1 means 1 is to 1. One data is related to one data. Single data is related to single data. That is 1 is to 1. 1 is to n means single data is related to many data. That is 1 is to n. N is to 1 means many data is related to single data. And n is to m means many data is related to many data. Okay, in hierarchical model, 1 is to 1 or 1 is to n system is used. In network model, n is to 1 and n is to m model is implemented. बुझिला? बुझिला ना एटा? Yes, sir. Then relational model supports 1 is to 1, 1 is to n is to 1 and n is to m relationship. The both hierarchical model and network model both are, the relational model supports the above both models, that is hierarchical model and network model. In hierarchical model, the system is 1 is to 1 and 1 is to n, and in network model, the system is n is to 1 and n is to m. And the relational model supports both hierarchical model and network model also. A significant aspects of the relational model is that the relationships between data items are not explicitly stated by pointers. Instead, it is up to the DBMS to deduce the relationship from the existence of matching data in different tables. So the absence of physical links provides a more flexible data manipulation environment. So this is the basic concept and the basic idea and basic architect, you can say also, for the relational model. Then data models. ODBMS. Here it comes ODBMS. ODBMS means Object Oriented Database Management System. Is the data model in which data is stored in form of different objects, which are instances of different classes. These classes and objects together makes an object-oriented data model. Clear? And the relational model supports all the 4 relations. 4 relations means what I have written in previous slide, this one. This one.
First two model, and in the second line also there are two models, including 2 and 2 it comes 4. So here it tells the relational model supports all the four relationships: one is to one, one is to many is to one, and many is to many. So these four relationships are there in data model. So the relational model supports all the four relationships. Clear? Okay, sir. Yes, sir. So then relational database management system. এই RDMS RDBMS କିଏ ଗୋଟେ ପଚାରୁଥିଲେ ନା? Yes, sir. हाँ तो DBMS and RDBMS जो सिस्टम कथा कहले कि पचारुଥିଲେ ମୁଁ जो randomly कहूଥିଲି exactly से जिंस. So it is a program. RDBMS ଗୋଟେ program that allows you to create, update and administer a relational database. Most relational database management system use the SQL language to access the database. The fourth generation language, SQL language, is used in relational database system and to access the database. So second one is characteristics of relation is of 9 types. They are different ways to approach. And in relational database management system, you can find the 9 characteristics. Okay. Then third one is criteria for a DBMS to be relational. The data. Sir, what are the 9 types? I have written. I am going to. Okay, I am going to next slide. I am going to. Okay. So data should be in tabular form. Pointer mechanism should be transparent to the DBMS users, and the system should support relational algebra operators. So these are the basic concepts and the basic functions and basic ideas of relational database management system. Sir, what is the meaning of tabular? Meaning of tabular? Yes, sir. So tabular means which data you can present, we can show in a table. Those information or those data you can show in a table, that is the tabular form. Okay, sir. Thank you. Okay. So then characteristics. These are the characters. A relation is always named. That is the first character. Second one is each column of a relation has a unique name. Third one is the order of the columns in a relation is of no consequence. Fourth one is there cannot be two identical tuples in a relation. माने डुप्लिकेशन किछि रहिबो नाही, सबुबेले यूनिक फॉर्म रे ही रहिबो. Fifth one is the order of the tuples in a relation is of no consequence. सेमान कौनसी ये भितरे कार किछि द्वंद्व रहिबो नाही. Sixth one is each column of a relation has a domain specification. सबु कॉलम रो गोटे गोटे सेपरेट डोमेन रहिबो. Seventh one, there may be more than one column in a relation having the same domain. Eighth one, a column in a relation cannot have more than one domain specification. And ninth one, each column contains values about the same attributes and each table cell value. Okay, so these are the 9 characteristics of relational database management system or any relation.
Okay, sir. ओके Okay, Okay, sir. sir. हाँ सो देन डाटाबेस सर्चिंग ये तो आम कॉन्सेप्ट जानीगले डाटाबेस डाटाबेस केमती क्रिएट करूचे कहीं क्रिएट करूचे को पर्पस रे क्रिएट करूचे एवं डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट डाटाबेसेस विषय भी डिस्कशन कले जानिले को डाटाबेस को फील्ड रे मध्ये यूज करूचे सेटा भी जानिले आ लाइब्रेरी रे मध्ये डाटाबेस काहे की यूज करूचे ता विषय रे भी डिस्कशन कले सब कले किंतु वर्तमान कथा आसुची बा वर्तमान जो हमर डिस्कशन रो समय होची जे हाउ टू सर्च ए डाटाबेस माने डाटाबेस आमे केमिति सर्च करबा व्हाट इज द डिफरेंट टेक्निक्स टू सर्च ए डाटाबेस so I have written here there are 7 basic steps in the search process आमे 7टा स्टेप देकी डाटाबेस सर्च करबा पई जिबा को पड़िबो कोन कोन से पॉइंट बा कोन कोन से स्टेप तो फास्ट स्टेप होची हमको प्रथमे आमर कांसेप्ट क्लियर करिया को पड़िबो जे वी हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस that reflect the key concepts of your research topic आमे जेतेबेले डाटाबेस सर्च करिया को जाउछु एठी मु लिखि देइ जे रिसर्च टॉपिक किंतु एग्जैक्टली नॉट रिसर्च टॉपिक आमे माने सेही टर्म को कंसंट्रेट करबानी आमे बेसिक रे भाबिबा बा चिंता करबा जे आमे डाटाबेस सर्च करिया को जो जाउछु काहे की जाउछु बा कोन उद्देश्य कोन अछि हमर जे आमे काहे की सेटर को सर्च करूछु ना आमे एथि पई सर्च करूछु जे हमर किछिटा इंफॉर्मेशन दरकार अछि बा आमे किछि इंफॉर्मेशन दरकार करूछु जा फल रे कि आमे डाटाबेस सर्च करिया पई जाउछु so before going to the database searching we have to concentrate on our keywords or we have to identify the our keywords on which particular on which word or on which query we are going to proceed so that is the first point आमे को टर्म रे बा को वर्ड को नै कि सर्च करिया पई जाउछु डाटाबेस बुझिला ना इथरे कोन डाउट रहिला कार हेलो No, sir. No, sir. हाँ ना ना एबे मो कहया कथा ए प्रीवियस क्लास रे किछि स्टूडेंट्स मु तो ना तो जानिनी बा कहि परनी तो किछि स्टूडेंट डिस्कशन करूथिले जे सेमिनार टॉपिक ऊपर तो एठी जेतु एटा गोटे आसुची डाटाबेस सर्चिंग पई तो एठी मु बेस्ट एग्जांपल लेले सेही विषयटा को भी कहि परिबी जे आमे जो सेमिनार टॉपिक पई जो हमर मन रे द्वंद अछि बा ई करूचे तो आमे मध्य जदी आम पाखरे ले डाटाबेस गोटे किछि थांता बा अवेलेबल थांता ताहले आमे वर्तमान से डाटाबेस को जाईकी हमर सेमिनार टॉपिक गोटे चूज करिया पई मध्य हमकु सेटा हेल्प करथांता कोन ना आमे धर डाटाबेस रे गलु को टॉपिक टा को आमे माइंड रे रखुछु इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ना इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ना यूजर्स एजुकेशन कि माने कोन आमे धरंतु माइंड रे रखिछु बा को टॉपिक ऊपर आमे सेमिनार करिवु बा सेमिनार दबु तो आमे सेही वर्ड टा को बा सेही कीवर्ड गोटे धरि की यूजर एजुकेशन धर मु कहली कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट गोटे मु कहली कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मध्ये आमे कहि परिबा तो ए टाइप रो जो हमर सब फ्रेजेस अछि बा वर्ड्स गुडा को अछि बा कीवर्ड बोली आमे जहा को कहूचे तो एमती गोटे गोटे कीवर्ड नै कि मध्ये आमे से डाटाबेस को सर्च कर परिबो एबो सेइथरे सेही टर्म टा को मारिले से डाटाबेस रे सेही टर्म रिलेटेड जतेकटा आर्टिकल थिबो से हमकु सेउडा सब देखिबो एवं सेइथरु सेही टाइटल रो हमकु जोटा कन्वीनियंट लागिवो बा जोटा हमकु गोटे सुटेबल लागिवो कि जोटा हमर गोटे आग्रह आसीबो इंटरेस्ट आसीबो तो सेइथरु सेमितिया गोटे टॉपिक ता हम हम सेमिनार पई चूज कर परिबो बुझिला Yes, sir. हां देन सेकंड स्टेप कोन हम पई रहउची
Now, formatting these keywords and phrases using techniques such as phrase searching and truncation that make the most of them. तो এই जोटा आइले मु कहली जे हमको कोटा दरकार बा को वर्ड टाको हम मोइले गुडे 4-5टा वर्ड या भितरे कहली तो ता भितरु को पर्टिकुलर वर्ड टा हमको माने भल लागुची बा को टर्म ऊपर हमें सर्च करबा को चाहूछु तो सेटा को हमें सेही अनुसार सर्च करिबा. Third one, turning these keywords and phrases into effective searches using a few easy to master techniques. माने जो वर्ड को हमें चूज करले बा हमर सिलेक्ट करले सेही वर्ड को नेकी केमिति इफेक्टिव सर्च हे परिबो माने जोटा मोइले कहली जे हमकु गोटे टर्म को नेकी हमकु किछटा आवश्यक होउची बा हमें किछटा चाहूछु इन्फॉर्मेशन से डाटाबेस तो सेही टर्म को नेकी जेतले मु यूज करूची तो सेथुरु मु केतेटा डाटा रिट्रीव करि पारली बा केते इन्फॉर्मेशन मु रिट्रीव करि पारली बा केतेटा फुल टेक्स्ट पेपर मु सेथुरु रिट्रीव करि पारली. thus सेटा होची थर्ड पॉइंट. Then fourth step होची using the filters and limits in databases to optimize your searches. माने आमे फिल्टर करिवु काहे फिल्टर करिवु ना मोइले कहली जे जो टर्म ता हमें यूज करले सेथरे सेही टर्म रिलेटेड जेते पेपर थिबो से सब जगह तुमको शो करियो मे बी 100 मे बी 200 मे बी 500 1000 या 1200 एमती किछि गोटे फिगर से शो करियो जे इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऊपरे एई डाटाबेस रे वर्तमान 1200 टा टाइटल अछि तबे सेथुर हमकु फिल्टर करिया पड़ियो आमे दर पुराना 2010 11 12 15 एमिति रे कोन हिची सेडा आमे दर छाड देली आमे रिसेंट टॉपिक कोन आसीची 2018 19 20 एमिति दर 2-3 वर्ष लास्ट 2 to 3 इयर्स आमे फिल्टर कर देली तेनु आम पाखरे कम हे गला इन्फॉर्मेशन तेनु जेतले लिमिटेशन पळि आसुची बा लिमिट पळि आसुची आम इन्फॉर्मेशन ने तो हमकु चूज करिया पय आउ टिके बेटर हो. Okay. Then fifth one, reviewing or evaluating your search results. Then sixth, making the most of your search results. So by using the information in database records and article reference lists to find other resources. अच्छा एठी कोन हुए ना आमे धर जो आर्टिकल टा पाइचू माने से आर्टिकल जे प्रिपेयर करिसंती से आर्टिकल प्रिपेयर करिया पई सीए मध्ये अन्य गुडे आर्टिकल भी रेफर करचंती जोटा कि तांकर इंडेक्स रे थिबो बा रेफरेंस बोली जोटा हमें पार्ट कहूचे से रेफरेंस रे से शो करथिबे जे सी आउ केतटा एक्स्ट्रा पेपर को रेफर करचंती बा स्टडी करचंती जा फल कि से तांकर ओटे पेपर बा कंप्लीट आर्टिकल रे प्रोड्यूस करचंती तो से जगह रे कोन हुए ना से रेफरेंस को देखिला पर मध्ये आमको जदि दरकार होची तो आमे मध्ये सेही रेफरेंस को जाई कि मध्ये भी सेही रेफरेंस रो फुल टेक्स्ट कोटे अवेलेबल आमे सेठी कि मध्ये जाई पारि बुझियो छी. हाँ सर. हां तो फाइनली बा लास्ट वन होची सर्च अगेन माने जोटा को आमे कहूचे रिसर्च research means search again and again. So searching is not a linear process and it is not enough to do just one search. You will need separate searches for each aspect of your topic. You will also need to repeat your searches in multiple databases. As you continue to search and read the literature related to your topic, you will find that you need to modify your searches to include the other keywords you come across or other aspects of the topic you need to investigate. तेनु एई जो लास्ट पॉइंट रे से कहूची ना सर्च अगेन एंड अगेन आमे जो टर्म गोटे बा जो वर्ड गोटे नै के बे सर्च करूचे तो सेही सर्च रे जदि हमको आउ किछि रिलेवेंट टॉपिक मध्ये मिली जाउची बा आउ किछि रिलेवेंट वर्ड मध्ये हम नजर को पळे आसुची तो हमें सेही वर्ड को मध्ये या सहित इंक्लूड करी जोटा कि हमें कहूचे बुलियन सर्च एंड और लाइक दिस तो बुलियन सर्च रे मध्ये भी हमें से डाटाबेस रे सर्च करि पारिबु सर्च अगेन एंड अगेन.
बुझिला so the database searching ro these seven but these are the seven basic steps and we have to go step by step to enter the database and to find and to retrieve and to collect our required informations. बुझिला Yes, sir. ना आउ कोन अबुझा रहला डाटाबेस सर्चिंग बा काहे सर्च करूचे केमिति सर्च करूचे ए सब जिनिस आ किछि डाउट रहउची की Nice, sir. ना अच्छा तमे सेमिनार पेपर सब पाइलानी माने सेमिनार टॉपिक ना सर Nice, No, sir. sir. केमिति माने तो सेटा केमिति हबो अच्छा आ गोटे ସାର୍ कथा ସାର୍ କହିଲେ ତ ଗ୍ରୁପ କରିକି କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗ୍ରୁପର ନୋଟିସ୍ ଦେଲେନି କି କେମିତି କ'ଣ ଗ୍ରୁପ ହବ से ଟପିକ୍ ବି करिवे କିଛି ଦେଲେନି। ग्रुप रे हबो माने से ग्रुप टा से क्रिएट करे देबे को रोल नंबर केते केते रु केते जाय को ग्रुप रे रहबे कोन करिवे आ से अनुसार करिवे अच्छा आ गोटे जिंस कहला हमर इलेक्टिव पेपर रे एमएल आईई 102 के रखछ Yes, sir. MLII-102 इलेक्टिव पेपर किए रखिछ कि जे आज प्रेजेंट अच्छा वर्तमान ताको भितरु के MLII-102 Yes, sir. Yes, sir. केते जण Sir, କେତେ ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରଖିଛି 102. 102 ताल तो हमको बोधे सेथरे सेमिनार भी दबाक पड़ियो Sir, ଏଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଥିବେ अंशुमान बारिक ବି ଥିବେ. अछंती अच्छा माने Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. He is available. MLI-102 ता माने सेटा होची तमरो रिसर्च मेथोडोलॉजी Yes, sir. ओके ठीक अछि तो देखिया ताले कोन करछन केबे ହଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଟାବେସ୍ ସର୍ଚିଂ ସ୍टेप्ସ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଇନଫରମେସନ ରିଟ୍ରିଭାଲ Sir, MLIE-102 ରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି sir? Sir, ନା ଆପଣ ନା ଯୋଉ କହିଲେ ଏବେ କରିବାକୁ ପଡେ ନା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବୋଧେ ସେଇଟାକୁ ସେ ମତେ ଦେବେ କି କଣ କାହିଁକିନା ସେ କାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲେ ତ Okay, 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 sir. ବୋଧେ ସେଇଟା ବୋଧେ ସିଏ ମତେ ଦେବେ କି କଣ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଅଛି କିଛି ତ କହିନାହାନ୍ତି Okay, sir. Okay, sir. so information retrieval so information retrieval can be defined as a software program that deals with the organization storage retrieval and evaluation of information from document repositories अच्छा मु बोधे फर्स्ट क्लास रे कि सेकंड क्लास रे कोठी गोटे डिस्कशन करैछि निश्चित जे इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी करथिली मन अछि इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी तार भी शॉर्ट हाँ फॉर्म सर यार तो सेठी इनफॉरमेशन सॉरी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी रे आमे जो कहउथिले जे जेतेबेले सिंगल यूजर आ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कथा डिस्कशन करथिले मु सेई जगह रे इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी विषय रे कहिथिली काहे कि ना इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी रे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स किबा यूनिक्स ही यूज करा जाय तो एठी वर्तमान आसुची जे डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी एथरे कोन होची ना इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एटार भी शॉर्ट फॉर्म होची आईआर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ले ये कोन करूची ना ये होची ऑर्गेनाइज करूची स्टोर करूची रिट्रीव करूची इवैल्यूएट भी करूची काहाकू ना इंफॉर्मेशन को कोठू ना फ्रॉम डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी जेमती आमे इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी क्रिएट करूचे बा हमर इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन को आमे स्टोर करूचे इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी रे सेमती डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी रु
इनफॉरमेशन कलेक्ट करी इनफॉरमेशन रिट्रीवल सिस्टम रे यूज करा जाउची एवं तार बेसिक फंक्शन होची कोन ना फास्ट टू ऑर्गेनाइज स्टोरेज रिट्रीव and evaluate of different informations collected from document repositories. Clear? So information retrieval is the activity of obtaining material that can usually be documented on an unstructured nature, that is usually text which satisfies an information need from within large collections which is stored on computers. For example, information retrieval can be when a user enters a query into the system. Information retrieval ର ମାନେ ନିହାତି ମାନେ ଅତି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ବା ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ନା ଇନଫର୍ମେସନ ରିଟ୍ରିଭାଲ ହଉଛି ବା କେତେବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ ହଉଛି ହଁ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ମୁଁ ତ କରୁଥିଲି ହଁ ହଁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ହଁ ହଁ କଲି ହଁ ମୁଁ 8 ଦେଖୁଛି 7:30 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ହେଲା ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ ରିଟ୍ରିଭାଲରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଯଦି ସିମ୍ପଲି ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବା ବା ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ଇନଫର୍ମେସନ ରିଟ୍ରିଭାଲ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଡାଟାବେସକୁ କିଛି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠଉଛୁ ବା କିଛି ଗୋଟେ କୋରି ଆମେ ପଠଉଛୁ ହେଲା ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ କୋରି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମେ ଡାଟାବେସକୁ ପଠଉଛୁ ତ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବା ସେ କୋରି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପ୍ରୋସେସ ସେ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ସେ ଆମକୁ ଦେଖଉଛି ବା ଶୋ କରୁଛି ଆମେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖି ପାରୁଛେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦି ଇନଫର୍ମେସନ ରିଟ୍ରିଭାଲ ପ୍ରୋସେସ ଓକେ Okay, sir. So information retrieval system assist ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟଲି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦେଇଛି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଜାଣି ହବ ବେଟର ପଢିଲେ ଏଇଟାକୁ ସେ ଆସିଷ୍ଟ କରୁଛି ବା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଦି ୟୁଜର୍ସ କଣ ନା ଇନ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେ ରିକ୍ୱାର ବଟ୍ ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟଲି ରିଟର୍ନ ଦି ଆନ୍ସର୍ସ ଟୁ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆମେ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ସେ ଆମକୁ କିଛି ଦଉନି କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଠେଇଛୁ ବା କଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମେ ଡାଟାବେସକୁ ପଠେଇଛୁ ତାର ଇନଫର୍ମେସନ ସେ ଆମକୁ ଶୋ କରୁଛି ବୁଝିହଉଛି ଇଟ୍ ନୋଟିଫାଇଜ୍ regarding the existence and location of documents that might consist of the required information. Information retrieval also extends support to users in browsing or filtering document collection or processing a set of retrieved documents. The system searches over billions of documents stored on millions of computers. A spam filter, manual or automatic means are provided by email program for classifying the mails so that it can be placed directly into particular folders. Just for example, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମେଲ ଆଇଡି ଅଛି ଯଦି ମେଲ ଆଇଡି ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଲ ବକ୍ସକୁ ଇନବକ୍ସକୁ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ କରୁ ଯେ କିଛିଟା ମେଲ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ସ୍ପାମ ବକ୍ସରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇଯାଇଛି ନୋଟିସ କରିଛ ନା କରିନ हाँ सर करिए ହଁ ତ ସ୍ପାମ ବକ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋର ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପାମ ବକ୍ସ ଖୋଲୁନୁ ତ ଆମେ ସେ ମେଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଆୱାରନେସ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମେ କେବଳ ଆମର ଇନବକ୍ସଟାକୁ ହିଁ ଚେକ୍ କରୁ ସବୁବେଳେ ତ ସ୍ପାମ ବକ୍ସ କାହିଁକି ଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖେ ଯେ ଆମ ପାଖକୁ କିଏ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି କିଛି ମେଲ
बा कौनसी एक माने गोटे अनऑथेंटिकेटेड सोर्स रु जदि किछि मेल आसुची तो से ईमेल इटसेल्फ कौन करे ना से बेले बेले से मेल को गोटे स्पैम बॉक्स ने रखि दिए सी भाबे जे बोध हुए एई मेल गुडा आम पई किछि दरकार नाही एथिबे so an IR system has the ability to represent, store, organize and access information items. A set of keywords are required to search. ए जिंदे आमे ले मु डिस्कशन करूथिले बा स्टेप बाय स्टेप डाटाबेस सर्च रो आमे डिस्कशन करूथिले तो आमे सेठी देखुथिले कोन ना सी कहूची हमकु जे आमे फास्ट होची चूज करबो किछिटा कीवर्ड बा किछिटा फ्रेज कहीं ना जो कीवर्ड को लेकिन बा जो फ्रेज को लेकिन आमे हमर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सर्च करबा पई आगु को आगे पारिबो तो सेति पई से कहूची जे ए सेट ऑफ कीवर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू सर्च but to proceed in information retrieval system. So keywords are what people are searching for in search engines and summarize the description of the information. Okay. See, this is the Okay. this is the components of information retrieval model. This is the best model or this is a model for information retrieval and these are the components in information retrieval system. First of all, system is required. Then this part is considered as the management part. System is required, then acquisition should be there, representation should be there, and file organization should be maintained by the library professionals. Okay, so these are the basic functions of library, and the librarian should do all these works. System should be there, that is infrastructure we can tell, and acquisition should be there. You have to acquire the information or the database for and to store those databases in the system. Then representation, and you the library people or the librarian should aware of the representation, how to represent the database or how to represent the information available in that database. Then file organization, those files present in that database, that file organization is a major role by major part by major function of that librarian. So all these functions the librarian should do. After that, then comes the user. यूजर कौन कला ना यूजर आसिला ता प्रॉब्लम कौन से कहूची प्रॉब्लम को केमते रिप्रेजेंट करबा सेटा भी से कहबो तापर तार कौन क्वेरी अछि बा कौन से इंफॉर्मेशन बा कीवर्ड बा फ्रेज से माने चाहुचंती कौन सर्च करबा पई तापर सेटा देबे सेटा देला परे कौन हबो ना एपटे जो हमर फाइल ऑर्गेनाइजेशन है कि बा फाइल ऑर्गेनाइज है कि जो अछि डाटाबेस रे स्टोर अछि तो सेही डाटाबेस रो बा डाटा बा इंफॉर्मेशन सहित एपटे यूजर जो क्वेरी सेटा मैच करिवार अछि जदि मैच न करूची बा जो वर्ड बा जो फ्रेज आमे रिक्वेस्ट करूचू जदि सेही फ्रेज बा सेही वर्ड रो रिलेटेड कोनोसी इंफॉर्मेशन एपटे डाटाबेस रे नाही ताहले आमे कोनोसी इंफॉर्मेशन एपटे पाइबु नाही जदि आम क्वेरी बा आम फ्रेज बा आम कीवर्ड मैच करूची डाटाबेस सहित ताहले एठी डाटा रिट्रीव हबो बा ऑब्जेक्ट रिट्रीव हबो तो जो ऑब्जेक्ट एठी आमे पाइलु से अनुसार आमे हमरो फीडबैक भी दे परिबु जे हमरो जो ए जो इंफॉर्मेशन पाइलु बा ए जो ऑब्जेक्ट आमे रिट्रीव करूचु एथरे आमे सैटिस्फाइड ना डिसैटिस्फाइड बा आमे अन्य कोन चाहुचु कि कोन होची तो फीडबैक मध्ये आमे दे परिबु तो दिस इज द concept that this is the different components of information retrieval system बुझेला Yes, sir.
मॉडल बुझेला तो देन सर्च स्ट्रैटेजी माने को स्ट्रैटेजी व्हाट Sir, it is स्ट्रैटेजी a part of user studies. है Sir, ये search strategy. Search हाँ strategy is a part of user studies. हाँ सर्च स्ट्रैटेजी इज ए पार्ट ऑफ यूजर स्टडी कहीं ना यही टेक्निक यूज करके यूजर मानक ही सब जिनस एटा लाइब्रेरियन मानकर बा लाइब्रेरी प्रोफेशनल मानक पई जेतिकी इंपोर्टेंट नुहे बा जेतिकी माने ताकर धर ये रहउची तो यार बेसिक बा माने मेजर रोल रहउची बा मेजर माने एडवांटेज होची जे यूजर माने याको केते माने यूज करूछन बा एथरो कोन बेनिफिट पाउछन नहले आमे लक्ष लक्ष टंका जो कहला बेले ऑर्गेनाइजेशन बा डिफरेंट इंस्टीट्यूशन स्पेयर करूची डाटाबेस माने एक्वायर करूची बा माने ये करूचंदी जदि लाइब्रेरी यूजर्स माने ताको यूज करिवेनी बा सेथरो किछि इंफॉर्मेशन ताकर दरकार भी होउनी बा से माने किछि रिक्वायर करू नांती से जिंस बा साको सर्च करिया को ताको टाइम मिलुनी बा आसु नांती बसु नांती देखु नांती किछि नै ताले से एते पैसा खर्च करके डाटाबेस रखिवार कोन माने अछि so Okay, that sir. the search strategy is a part of user education the which on which strategy the users can approach first one is understanding the users requirement प्रथम जिनिस होची जे एले मु जिनिसटा कहली जे जो डाटाबेस हमर लाइब्रेरी रे अछि सेही डाटाबेस को बा सेही डाटाबेस रु आमर यूजर माने किछि बेनिफिट पाइबे ना पाइबेनी माने धरंतु मु कहली आमे गोटे जनरल कॉलेज रे धर अच्छे जेमते हमर जो बीजेबी राजधानी कि अन्य जो कॉलेज सब अच्छी रेवेन्सा एससीएस कॉलेज ए टाइप धर जनरल कॉलेज धर जनरल कॉलेज रे लाइब्रेरी अच्छी सेठी तांकर कोन हैला ना गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट रे प्रोवाइड करूची बोली सी धर गोटे इंजीनियरिंग डाटाबेस गोटे धर तांको कॉलेज रे तांको लाइब्रेरी धर सेटअप करै देला गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट रे दउची बा गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट रे मिलुची तेनु सी तार सब कॉलेज रे गोटे गोटे दे देला माने भलो नामी दामी कॉलेज रे तो व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ इंजीनियरिंग डाटाबेस इन बीजेपी कॉलेज और No use, sir. some other college like BJP college I mean in Revensa or in SCS college Puri or in some other government colleges so what will be the benefit of engineering database in general college No use, sir. No no benefit. use no use बा से यूजर जे भी से स्टूडेंट सेते अछंती बा फैकल्टी अछंती से माने केही भी तार किछि बेनिफिट पाइबेनी बा किछि भी ताकर काम रे लागिबोनी so there is no use of that engineering database placed or available in the general colleges so likewise mu seiti mai कहूची जे फर्स्ट थिंग होची अंडरस्टैंडिंग द यूजर्स रिक्वायरमेंट हमर लाइब्रेरी यूजर मानकर कोन रिक्वायरमेंट रहउची तो सही रिक्वायरमेंट को देखिकी ही हमको डाटाबेस माने चूज करिया को पड़े बा पड़िबो then second one is selecting the database to search तो धरंतु एठी सिलेक्टिंग द डाटाबेस टू सर्च जो कहला काहेकि ना धरंतु हमर जनरली गोटे यूनिवर्सिटी धर उत्कल यूनिवर्सिटी कथा हमें चिंता करबा उत्कल यूनिवर्सिटी रे सब फील्ड अछि कोन प्योर साइंस अप्लाइड साइंस देन सोशल साइंस देन मैनेजमेंट आल्सो अछि आ माने डिफरेंट विंग मध्ये अछि यूनिवर्सिटी रे जेतु यूनिवर्सिटी तनो यूनिवर्सिटी रे डिफरेंट विंग कंबाइनली थाए सोशल साइंस कहले हमें धर माने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस आ माने आर्ट्स स्ट्रीम जोटा बोले हम कहूचे इकोनॉमिक्स इंग्लिश ए सब अछि प्योर साइंस कहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स माने ए सब जिंस अछि अप्लाइड साइंस कहले इंजीनियरिंग सेक्शन अछि त ए टाइप रो डिफरेंट विंग सब जो यूनिवर्सिटी लेवल ले अछि तो सेथरे से कहूची सेकंड वन होची कोन हमर सर्च स्ट्रेटजी रे सिलेक्टिंग द डाटाबेस टू सर्च तो सेमाने कोन करथिबे बा उत्कल यूनिवर्सिटी रे कोन हेतिबो ना ताकर इंजीनियरिंग डाटाबेस थिबो ताकर सोशल साइंस डाटाबेस भी थिबो ताकर लॉ डाटाबेस भी थिबो ताकर मैनेजमेंट डाटाबेस भी थिबो एवं ताकर सोशल साइंस डाटाबेस भी थाई पारे तो इन डिफरेंट डाटाबेस सेमानकर यूनिवर्सिटी रे थिबो
सेठी आमर कौन होची ना सिलेक्टिंग द डाटाबेस टू सर्च रे मु धर गोटे लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस फील्ड रु जाइछि तो मोर इंजीनियरिंग डाटाबेस किसी आवश्यक नहीं मोर मैनेजमेंट डाटाबेस किसी आवश्यक नहीं मोर प्योर साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी एवढा किसी आवश्यक नहीं तो मते लाइब्रेरी साइंस डाटाबेस ही दरकार तो आई हैव टू सिलेक्ट द डाटाबेस व्हाट आई वांट टू सर्च दैट इज द सेकंड स्ट्रेटजी then third one is formulating the search statement so after selecting the database I have to formulate my statement but search statement माने मु को स्टेटमेंट दे की सर्च करबा को प्रोसीड करबी जोटा कि 7 स्टेप्स ऑफ सर्च स्ट्रेटजी बोले हम या पूर्व डिस्कशन करले एग्जैक्टली सही स्टेप दे की मते मो सर्च स्ट्रेटजी टा को बा सर्च स्टेटमेंट टा को मते फॉर्मुलेट करबा को पड़ियो बट आई हैव टू सिलेक्ट आल्सो क्लियर so these are the basic three fundamentals of search strategy then understanding the users requirements what the users want or what the users require and what the users are interested to get their required or authentic information so the first the point is to understand the user's requirement so while as a library professional if I am working in a library and I am sitting on my seat to provide some information then user come and ask me sir or madam I want this information so I have to understand first of all I have to understand the user's requirement what exactly the users want what the users exactly want to retrieve so first of all the library professionals should understand the user's requirement okay so the semantic gap between the actual need expressed need and information need as perceived by the information intermediary are sought to be breached so these are the 3 points माने difference actual need तांकर कोन रहउची expressed need तांकर कोन रहउची बा माने से कु टर्म को नै कि हम आगरे एक्सप्रेस करूचंती सेथुर हमकु बुझिबा दरकार जे से यूजर को कोन एक्चुअली नीड होची so this process is particularly important if the end user is not present during the search ए सब जिनिस केते बेले अवेलेबल होबो ना जदी जणे ओवर टेलीफोन बा ओवर ईमेल हमकु गोटे रिक्वेस्ट करिछि आमे ता रिक्वेस्ट को देखि कि आमे डाटाबेस सर्च करछु तो से जगह रे ए प्रॉब्लम अराइज करे कोन ना एक्चुअल से यूजर कोन चाहुचंती ओके तो से यूजर कोन चाहुचंती सेटा को हमको आग डिस्टिंग्विश करियो को पड़े सेटा को हमको आग डिस्टिंग्विश करियो को पड़े तापर से तांकर कोन एक्सप्रेशन देइचंती तांकर जो माने जो मेल लेबा ओवर टेलीफोन में ताको हमको नजर रखी कि एटा प्रॉब्लम अराइज करे सही समय रे जेते बेले जे यूजर्स आर नॉट प्रेजेंट विथ यू but during search time when we are going to search the database for any user so if the user is not present with us during that time so these problems may arise okay then an understanding of the requirements in terms of preferred level of recall precision tolerance is also necessary before proceeding with the actual search तेणु आमको धैर्यर सहित मध्य भी ए सब सिचुएशन को फेस करिया को पड़े आमे जदी इरिटेट होबा बा आमे जदी हमर कंसंट्रेशन लूज करि जिबा बा हमर माने कोन अधैर्य ही पड़ी जिबा ताहले मध्य भी लाइब्रेरी रे ठीक भाबरे काम हे परिबो नाही तना विभिन्न लाइब्रेरी रे विभिन्न प्रकार रे यूजर को तुमको फेस करिया को पड़िबो
किए रिसर्च करुथिबे बा रिसर्चर हेतिबे तांका पाखरे टाइम नथिबो सी ओवर टेलीफोन ने तुमको कौन गोटे लाइन कहीदेले कौन कले तापर फोन रखीदेले तापर तुम जेते तांको कॉल बैक करथुओ सी जमा फोन धर नथिबे काहे सी तांका काम रे व्यस्त थिबे तेणु आमको से समय ए सब जो सिचुएशन को मध्य भी माने सामना करने को पड़े एकदम पॉजिटिव वे रे आमे तमे यदि विरक्त हो बा किए जदि किछि इरिटेट हो बा किए अधैर्य भी हो पड़िबो ताहले मध्य भी से यूजर मध्य ताकर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन से माने ठीक समय रे भी पाइबे नाही बुझिला Yes, sir. then selecting how to select the database search first one is academic subject covered माने एले जो कथा मुले कहली जस्ट पूर्व डिस्कशन कली जे गोटे इंजीनियरिंग डाटाबेस जदी जनरल कॉलेज रे अवेलेबल ताले व्हाट विल बी द बेनिफिट किछि होबनी जदी यूनिवर्सिटी लेवल ले हमें चिंता करबा ताले यूनिवर्सिटी लेवल ले डिफरेंट डाटाबेस निश्चित भाव में प्रेजेंट थिबो तो से डाटाबेस को हमको कोन करिया को पड़े ना दी एकेडमिक सब्जेक्ट कोन कोन से कवर करचंदी सेटा को मध्ये हमको सिलेक्ट करिया को पड़िबो एले जो मु कहली जे जदी मु जेतु लाइब्रेरी साइंस फील्ड रो जाईची तो मते इंजीनियरिंग दरकार नहीं प्योर साइंस दरकार नहीं तो मते लाइब्रेरी साइंस रो डाटाबेस ही आवश्यक करूची बा मोर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सेही डाटाबेस रे ही थिबो बा मु सेहीटा खोजिले ही बा सेही डाटाबेस ता खोजिले मु मोर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सेतु पाई परिबो तो फर्स्ट पॉइंट इज द एकेडमिक सब्जेक्ट्स कवर्ड तो व्हाट एकेडमिक सब्जेक्ट्स दैट डाटाबेस कवर करूची सेटा को हमको चूज करिया को पड़िबो बा माइंड रे रखिया को पड़िबो सेकंड पॉइंट हैला द टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडेड माने को मटेरियल से डाटाबेस इंक्लूड करूची सच एज फॉर एग्जांपल स्कॉलरली जर्नल आर्टिकल्स ना प्रोफेशनल रिपोर्ट्स ना इमेज ऑफ वर्क ऑफ आर्ट ना एनसाइक्लोपीडिया आर्टिकल्स ना पॉपुलर मैगजीन आर्टिकल्स माने दीज आर द वेराइड फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशंस तेणु आमको एटा को भी नजर करिया को पड़िबो बा एटा को भी ध्यान देबा को पड़िबो जे आमे जो एकेडमिक सब्जेक्ट आमे चूज करलु बा कवर कोन कोन एकेडमिक सब्जेक्ट कवर करूची ता भीतर मध्ये हमको एटा को भी चूज करिवार अछि बा याकू भी देखिवार अछि जे कोन कोन मटेरियल बा कोन कोन इंफॉर्मेशन ये कवर करूची फुल टेक्स्ट कवर करूची ना नहीं ना खाली एब्स्ट्रैक्ट कवर करूची स्कॉलरली जर्नल आर्टिकल अछि ना नहीं प्रोफेशनल रिपोर्ट्स भी अछि ना नहीं ए सब जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन ए सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट and third one is the available of full text of articles yes मोले कहउतली से जिंस जे हमको चूज करिवार अछि जे whether the full text article is available in that database or only abstract is available and finally the date range of materials covered तो डेट रेंज मोले आ टिके पूर्व डिस्कशन बेले जोटा ई करथली जे गोटे सर्च हमें देइचे बा कोन से गोटे क्वेरी देइचे से हमको बहुत गुडे इंफॉर्मेशन देला तो जदि देला आमे ताको फिल्टर करिवा केमती फिल्टर करिवा ना आमे पुराना डॉक्यूमेंट को सब डिलीट कर दो ना 2010 9 8 एई सब ईयर रे जो डॉक्यूमेंट आइची सेडा सब पुराना हे गेलानी तो हमको सेडा किछ आवश्यक नै तो ताको मु सब डिलीट कर देली बा ओमिट कर देली ता पूर्वरु मते रिसेंट जो 2 to 3 इयर्स 1920 मान 2019 2020 2018 एई जो लास्ट 2 to 3 इयर्स रा इंफॉर्मेशन बा रिकॉर्ड मते दरकार तो मु सेठी डाटा रेंज ऑफ मटेरियल्स कवर तो कोठू को रेंज पर्यंत मटेरियल बा डाटा ये कवर करूची तो सेटा को मध्ये हमको भी ध्यान देबा को पड़ो बुझिला Yes, sir. then formulating the search statement हमको आम सर्च स्टेटमेंट फॉर्मुलेट भी करिया को पड़िबो केमती केमती ना आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स ऑफ द मेन कांसेप्ट ऑफ योर रिसर्च टॉपिक एले जस्ट मु जो कहउतली तुमको सेमिनार टॉपिक मिलेनी त सेमिनार टॉपिक तुम गोटे चूज करिया को अछि तेणु तो हम पाखे जदि गोटे डाटाबेस अवेलेबल आमे सेही कीवर्ड को देके आमे हमर रिसर्च टॉपिक चूज करि पारिबु सेकंड वन थिंक द सेमिनार टर्म similar terms that means synonyms or phrases that might also be used to describe these concepts हां कोन हुए इंति बेले बेले ना सिमिलर टर्म रे आसी जाए माने धर गोटे मु कहबी गोटे टर्म फुटबॉल फुटबॉल रो आ गोटे टर्म रहउची
बा सिनोनिम रहउची सकर। बुझिला तो मे भी फुटबॉल ऊपर भी सर्च कले आमे गुटे डॉक्यूमेंट पाइबा एवं सकर रे मध्य सर्च कले मध्य आमे गुटे डॉक्यूमेंट भी पाइबा। तो सेठी जगह कौन हुए ना एगुड़ा को आमे सिनोनिम बोली कहू सिमिलर टर्म बोली कहू। तेणु आमको यही सब को भी सर्चिंग बेले ध्यान देवाक पड़े जे फुटबॉल रे जदि आमे खोजुचे ताहले मध्य भी फुटबॉल रे किछि डॉक्यूमेंट पाइला परे आमे आउथरे सकर जो टर्म टा अछि सेही टर्म टा को यूज करिक मध्य भी आमे गुटे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करियाको पड़े। क्लासिक जदि आमे धर गोटे जस्ट फॉर एग्जांपल क्लासिक क्लासिक बोली कहले भी क्लासिक ऊपर भी किछि बाहरिबो ओनली क्लासी बोली कहले मध्य भी ता रिलेटेड भी गुडे माने डॉक्यूमेंट भी बाहरिबो। तो एटा भी गोटे कांसेप्ट आसुची बा एटा को वर्तमान हमकु भी ध्यान देबाक पड़िबो जेतेबेले आमे हमर सर्च स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करूछु। तो ए सब जिंस को भी हमकु टिके केयरफुली देखिबाक भी पड़िबो। Then combine your search terms in a way that a database can understand। माने हमकु ए टर्म गुडा को एमिति कंबाइन करिया पड़िबो जोटा कि बा जो टर्म बा जो वर्ड गुडा को एक्चुअली से डाटाबेस अंडरस्टैंड करि परथिबो। नहले मोइल जोटा कहले आमे हमर क्वेरी सबमिट करलु बा आमे हमर टर्म गोटे सबमिट करलु जदि से टर्म ता डाटाबेस सहित मैच करूनी बा सेमति किछि टर्म ता देर नाही बा सेमति किछि डॉक्यूमेंट नाही ताले वी विल बी नॉट गेटिंग एनी वन डॉक्यूमेंट थ्रू आवर डाटाबेस। हमकु किछि हेले मिलिबो नाही। क्लियर? Then choosing a database, how to choose a database? तो एटा तो करथिले बोते न कोन एटा डबल ले जाइछो। देन कंपाउंड क्वेरी रे कोन हुए माने बुलियन सर्च बोली आमे जोटा कहूचे एंड और ए सब को आमे यूज करि परिबा। कंपाउंड क्वेरी इंफॉर्मेशन और डाटा इंफॉर्मेशन एंड रिट्रीवल इंफॉर्मेशन नॉट डाटा माने नॉट डाटा जदि आमे करूचे ताले इंफॉर्मेशन संगरे डाटा जोटी एक्सक्लूड हे कि थिबो सेही जगह रे माने सेही टर्म गुडा खाली आसी जिवो। इंफॉर्मेशन और डाटा जदि आमे करूचे ताले इंफॉर्मेशन सहित डाटा जोटी इंटरलिंक हे अछि बा कंबाइंड हे अछि बा डाटा इंटीग्रेट हे अछि तो से सब इंफॉर्मेशन गुडा सब पळे आसीबो एट ए टाइम। तो इंफॉर्मेशन एंड रिट्रीवल जदि कहूचे ताले इंफॉर्मेशन एंड रिट्रीवल ले रिलेटेड जते माने डॉक्यूमेंट बा आइटम अछि से सब जिंस मदा एट ए टाइम हम पाखु भी आसी जाउछ। क्लियर? बुझिला? Yes sir. Yes sir. हां तो आउ कोन आज पय एति की नेक्स्ट क्लास आ गोटे कोन कार अछि परा सर पीपीटी टा सर ग्रुप रे शेयर कर देबा। हां कर देबी। हां सर थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.
Shiva.